ऐसे करके ऐसे मारा मारा ऐसे मारा ना। साला अभी कोई नहीं है देख रहा है बेटा। क्लोज में है ना। हाँ एक तो ऐसे आया है ना। एक तो ऐसे দিতে হবে ভোটটা দিতেই হবে। है ना। नहीं इसको रखिए, मेरे पास है। 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स, अभिलाष, नेशनल एंथम, टी ब्रेक। अरे क्या चले पीछे होगा। हाँ पीछे होगा घूमेगा ना। फिर 2:30 बजे से 4:30 लेचा हॉल में। नहीं हाँ लेचा हॉल में तो है, पान हो गया। हाँ वहाँ तो है ये पुरुषोत्तम कुमार का। हाँ वो तो है यहाँ पे मानती बाबू का मेला वहाँ लेचा हॉल में। ओला 12 बजे से 1:30 बजे। 12 बजे नहीं, दो से 4 आप पहले भेजे थे ना।
वो देना Only 20, first 20. फर्स्ट 20 ऑफ कर दीजिएगा बात कर रहे हैं हेलो चल रहा है, चेक करो। चेक चेक साउंड बढ़ाएंगे साउंड बढ़ाएंगे इनफ साउंड बढ़ाएंगे हेलो चेक चेक हेलो हेलो गुड मॉर्निंग थोड़ा और साउंड चाहिए फोल्डर दे दिया मैडम हाथ में फोल्डर एंड कंटेंट सब दिखा करके हाथ में दे विल कैरी इट अराउंड हेलो सर एनएमएल ग्रुप में डाल देते हैं एम्प्लॉयज को कुछ लोग रिमाइंडर हाँ, आता है एक मेरे को इशारा करना तब मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक मैं वहीं खड़े रहूँगा हम ग्रुप में डाल देते हैं मैसेज सबको क्या रिमाइंडर इशारा दिया। करोगे? हाथ हिला दूंगा बस चीफ गेस्ट आ गया ना हाँ बढ़िया से करिए डोंट वरी अबाउट बिल्कुल सर मैं इधर ही खड़े रहूँगी, मैं इसको वहाँ रख देती हूँ, साइलेंट पे कर देती हूँ। Hello, hello, mic test. Hello, hello. Hello, hello, 1 2 3 4. Hello, hello, mic test. Hello. Hello, 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 mic test. 1 2 3 4. Hello. अभी जलाएंगे वो। कल चला हाँ, आज अलग प्रोग्राम है कल अलग प्रोग्राम था हेलो कहाँ पर है हमारा जहाँ देना हुआ दे दीजिए तो उन्होंने बोला दिया नहीं এই শোন অনির্বাণ ओके লেকচার হলে দুটো পট দিয়েছিস পট তো আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছি 1 2 3 দুটো পট তো এখানেই আছে ফ্লাওয়ার কোথায় ছেড়ে দাও। না এখানে গোলাপ তুলে দিই এই জন্য পট সাজাতে হলে ফ্লাওয়ার ওয়ালাকে না বলে না না ফ্লাওয়ারও আছে তুই ফ্লাওয়ারটা ফেলে দিয়েছিস নাকি কালকে আমি কিছু ফেলে নয় তো দুটো পট ওখানেই আছে ফ্লাওয়ার অনেক বেশি আছে এখান থেকে Hello, hello, mic test. 1 2 3 4. Hello, hello. संजिस्टा मैडम गेस्ट के साथ में है वो डायरेक्टर ऑफिस में कुछ काम अच्छा मैडम उधर ही ওই যে ছেলেটা ওটাকে নিয়ে গিয়ে বুকে নিয়ে ওখানে দিয়ে আর ওখানে না আছে কিনা দেখে নিই
नमस्कार, सुप्रभात। सभागार में उपस्थित सभी माननीय गणमान्य अतिथिगण, उद्योगों से आए हुए प्रतिनिधि, शिल्पकारों, हमारे CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर परिवार के सभी साथी सदस्य, देवियों और सज्जनों, आप सभी का हमारी प्रयोगशाला में स्वागत है। आयोजन समिति की ओर से मैं प्रतिमा मेश्राम और डॉक्टर आलोक कुमार मेहर एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम के चौथे दिन खनिज, धातु और सामग्री में तकनीकी उद्यमिता पर आधारित इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। Good morning and a warm welcome to all of you. Before you start the program, I am requesting all of you kindly switch off your mobile phone or in silent mode for this entire program of this auditorium. For your safety information, to exit from this auditorium, there is one door at your left hand side and another 3 gates are in the back side. So the doors may be used in case of emergency. Thank you. मैं आयोजन समिति की ओर से डॉक्टर अविनीश कुमार श्रीवास्तव, निदेशक CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार पाठक, सचिव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत सरकार, सम्मानित अतिथि श्री उज्ज्वल चक्रवर्ती, अध्यक्ष CII झारखंड चैप्टर और MD जमशेदपुर कंटिन्यूअस एनीलिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर रविंद्र शर्मा, निदेशक मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर भारत सरकार और डॉक्टर स्मिता पुतुचेरी, परियोजना समन्वयक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत सरकार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। The theme of today's program is Technopreneurship in Minerals, Metals and Materials, platform from entrepreneurship and MSMEs. The event has been organized for the delegates from industries to have technical collaborations and also a unique platform for Silpakars to interact with scientists for the upliftment of their product quality and other societal benefits. Now I request all the dignitaries in the dais to inaugurate the program by lighting the ceremonial lamp. आप सभी का धन्यवाद। अब मैं हमारे निदेशक महोदय को स्वागत भाषण के लिए मंच पर आने का अनुरोध करना चाहता हूँ। सर प्लीज।
Good morning, namaste to all of you. Today we are in the fourth day of the 1 week, 1 lab program of CSIR. And CSIR National Metallurgical Laboratory, we started this program from 24th of this month by the inauguration function at Ranchi, in gracious presence of Honorable Governor of Jharkhand, Shri C.P. Radhakrishnan ji, His Excellency. And then we had various activities in last 3 days. And today we are starting the program with technopreneurship in minerals, metals, and materials. First of all, this 1 week, 1 lab program is unique program in CSIR in the history of last 80 years of CSIR. In 1942, CSIR was established. And then the thing is that CSIR does R&D, technology development in various areas. You think about the area of research and CSIR is there. It's a sort of that. In 37 labs of CSIR across 23 cities in the country. And there is a group of labs, about 10 labs, which are basically focusing on metallurgy and materials. And NML, National Metallurgical Laboratory, which was founded in 1950. It's the only lab totally dedicated on metallurgical aspects of the materials. Now, the idea was that there are so many research work going on in CSIR in various labs. But it's like when we see the utilization of this research in terms of technology, and then technology goes to common man, is the kind of like underutilization. We have so many good technologies, but a common man or the stakeholder, industry person, or the concerned ministries, they are not aware. So to showcase our research and technologies, in last Foundation Day, which was held on 26 September in Delhi, the Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jiten Singh ji, gave an idea that why can't we have 1 month, 1 lab program. But then there was a question that we have 37 labs, and we are trying that there should not be overlap between 2 labs program. So if we have 1 lab, 1 month, 1 lab, then labs will go on doing this program in next 37 months. So some lab may get chance after 2 years or 3 years. So that will be too lengthy period. So then it was decided that let's have 1 week, 1 lab program. That is the idea behind that. So every lab got slot due to various reasons, different dates, slots. Some labs decided to start on Foundation Day, some labs, because of several reasons, these slots are divided. And best thing is that we try to have no overlap between the 2 labs programs. So NML got the slot between 24th April to 28th April. And to carry out various activities, as I said. And this technopreneurship in minerals, metals, and materials, it is considered a very, very important aspect when we think about NML and we think about the Indian industries related with metallurgy and materials. Just to brief, the technopreneurship is basically the word, a combination of technology and entrepreneurship. And technopreneurship is a simple entrepreneurship in a technology-intensive context. It is a process of merging technology, pros, and entrepreneurship talent and skills.
So you will see that there are Shilpkars also sitting in the auditorium. CSIR-NML has a rich heritage in leveraging various technologies in the areas of and materials. And since its inception, it has about 550 patents filed, 90 technologies developed, and many available for commercialization. And as a part of the 1 week, 1 lab event, we are organizing an industry and entrepreneurship meet on technopreneurship in minerals, metals, and materials. Today, on 4th day of this 1 week, 1 lab program, that is 27th April. The event aims to present, share, and deliberate on the various technologies ready for leveraging from NML and seek ideas to jointly work with entrepreneurs and MSMEs to promote indigenous solutions. In this meet, industries and entrepreneurs are invited to join hands with CSIR-NML for contributing within the country and to fulfill the Make in India initiative of Government of India to become the country self-reliant. CSIR-NML in recent times has transferred many technologies in the theme area of the event, and few shall be witnessed during the showcasing planned in this event. So when we talk about the self-reliant Atmanirbhar Bharat, we know that the 5 pillars: economy, infrastructure, demography, demand, and system. So the way we work, we have to think that we have to contribute in these 5 pillars of the country to make the country self-reliant. At same time, the sustainable development goals, which are basically fixed by the United Nations, and then Niti Aayog has accepted many of them. We have to contribute in that direction. Like no poverty, zero hunger, good health, education for all, gender equality, and all those things are there. So we have to see how to fulfill those criteria to make the country, bring the country from developing tag to developed countries. We are fortunate to have today the presence of Shri Rajesh Kumar Pathak ji, Secretary Technology Development Board, Shri Ujjwal Chakravarti, Chairman CII Jharkhand Chapter and MD of JCA-PCPL. JCA-PCPL, some of the people who are not very familiar with this terminology. Then it's Jamshedpur Continuous Annealing and Processing Company Private Limited. Okay. Then Dr. Ravindra Sharma, General Manager, Metal Handicraft Service Center. Dr. Smita Putucheri, Project Coordinator, TDB. They are here on the dais. And there are many dignitaries of the dais, then Shilpkars, participants, and people who are watching this directly or indirectly. I welcome all of you for this very important technopreneurship in minerals, metals, and materials program. And I wish that this should be one of the most successful events of all this 5 days program of NML and the entire events of CSIR. With this great hope and wishes, I once again welcome to all of you for this program, especially to our distinguished guests sitting on the dais who have come from various directions. But I was seeing that quorum was completed at 9:46 itself, and program was supposed to start at 10 a.m. So that's a good thing that our guests are so cautious and anxious to be part of this program. So with this brief note, thank you very much, and once again, welcome to all of you. Namaste, Jai Hind. Thank you so much for delivering the welcome address, sir. Now, taking forward the program, the first lecture shall be delivered by Dr. Smita Putuseri
a project coordinator as Technology Development Board, DST, Government of India. As a project coordinator of TDB, she is coordinating the project funding process and other activity of the department, which involves financial assistance to Indian industrial concern and other agencies, attempting development and commercial applications of indigenous technology or adopting imported technology to wider domestic applications. She is also a registered patent agent with Indian Patent Office. Dr. Smita received her PhD from IIT Kanpur in the area of material chemistry. She has experience in material processing specifically for sensors and actuator process applications. Before joining TDB, she worked as a postdoctorate fellow of IIT Roorkee on various DRDO projects. She has almost 30 publications in nationally and internationally reputed peer-reviewed journals and conferences, and also she has been credited with 2 patents. With her brief introduction, I am inviting Dr. Smita to deliver a brief talk on technopreneurship at TDB Outlook. This is your map. Good morning to all. Good morning to all the chief guests and all the participants from the industry side and I think CSIR-NML team and the organizing committee. Thank you for the introduction. I'm here to give you an introduction about Technology Development Board, as it is an industry entrepreneurship meet as named Technopreneurship. So as TDB, we are basically financially supporting Indian industrial concern for the indigenously developed product or adaptation of any technology from abroad and making it possible in India. So as a funding agency from government, I think this is the right platform for introducing the funding procedure of Technology Development Board. Okay. Okay. I will quickly run through the TDB mandate and the funding procedure, and this is the agenda for the talk. As stated before, Government of India constituted Technology Development Board in the year 1996 under the Technology Development Act as a statutory body to promote development and commercialization of indigenous technology and adaptation of imported technology for wider application. Our vision, mission and mandate, everything, commercializing innovation at TRL level 7 and above. Mostly when the many government agencies are there, starting from, you all may be knowing, like Department of Science and Technology and the Department of Biotechnology, they are funding in the level for the R&D projects. Mostly all the institutes may be getting R&D projects from many government agencies, but Technology Development Board is very specifically taking up the projects from TRL 7. That means you are reaching up to a level of marketing or commercialization of the R&D prototype, developed prototype. When you are ready for marketing, then you can approach TDB for the marketing, commercialization, development of the site. I can next slide explains what all we are funding. This already stated, like
where all we are funding. We are funding for the indigenous technology or if it is adaptation of the technology from abroad. These are the silent features of TDB funding. TDB is funding at a 5% simple interest loan. Mostly, we are funding in the form of grant, loan and equity, but majority of the funding is in the form of 5% simple interest loan with a moratorium period of 1 year and payment of the loan for 4.5 years. That means along with a royalty of 0.5%. In the TDB funding, the major project cost covered is listed here, like majority is covered for the site development and plant and machinery. Like once the prototype is ready, the industries are looking for the this prototype should be ready for the market. That means they are in need of the site development and plant and machinery establishment in a larger area. Just for the prototype development, they are not in need of a area or the bigger plant and machinery. Mostly they are going for the outsourcing. But once it comes to marketing, then they can have, with TDB funding, they can go for a site development, plant and machinery purchase, along with the other costs like marketing, technical know-how fee, cost of filing patent, and a part of it can be a contingency amount too. But we are focusing on the site development and plant and machinery. In that way, the company will be well established in the market. If they are getting more purchase order, or if they have to develop it in a quick way, they cannot go for the outsourcing. Better they can have in their own company. When a company is, our call for the proposal is open throughout the year. When a company is approaching TDB, whether they are getting the funding or not, the beauty of this government funding is that we are giving the best kind of a consultancy service in the form of, we will have technical experts from all the eminent institutes of India across, like from IITs, NIT, CSIR labs, and from CSIR-NML also we are having many technical experts in our team. So these technical experts are going to the site for the project evaluation along with the financial experts, and they are giving them, even the project is not through for a funding, they are getting the best kind of advice whether they can be successful in the market. A pre-prediction will be always given by the expert. So it is the project evaluation sequence you can see as mentioned here. First, once the project is submitted to TDB, it is going through the initial screening. That is called initial screening of the project, that will be done in the TDB office. And the company, none of the company will be, if you are submitting an application, we are never rejecting an application without a screening committee meeting. There the company will be called up to TDB office, and if there is anything less in the project, definitely they will give an advice and you can come back at any time. And next stage it goes to the project evaluation. That is project evaluation at the site. The technical expert along with the financial expert and a member from Technology Development Board will be going to the project site and evaluating the project in a thorough way, like going through each and every aspect, starting from the raw material to how the machinery installation. They will look into each and every aspect and how the money will be flowing into the project, whether the sequence of flow of money is in the right direction, whether they can meet the market or not. Everything will be evaluated in the project evaluation stage. If the project will be through, then we are going, if the project financing, there are different levels, like if it is less than 10 crores, there is no cap for TDB funding.
It always depends on the size of the project the company can take up. If the project, if there is, but always remember that if it is 100 crores project, 50% of the project cost has to come from the partnering company side. And if it is more than 20 crores, then the project always goes for a third party due diligence. If it is approved, then an agreement will be entered between the company and Technology Development Board, and the financial assistance will be released in a tranche mode, like based on the milestone, it will be released in 4 tranches, and every stage of the project progress, there will be project monitoring meeting. The same committee, like technical and financial expert, will be visiting the project site during every milestone progress, and if there is something lagging or if they can see any shortfall, they are giving the direction, and they will try to help the company to go further, to get the market in the right direction all the time. That way government is giving a service, but otherwise any company across India in any remote area, they can never expect that a good technical expert is going to visiting their site and giving them any direction. But here you can see every stage they will help you out to get the right market. Any industry person, if he is working for any project they are making in the lab level, never it's going to help them. Always whatever you are making in the lab level, it has to go to the market. And TDB is playing a role like whoever is taking the risk of entrepreneurship, they have to be success. Along with the normal funding for the project, TDB is giving national award every year. It is on 11th of May. And TDB is giving national award in this categories listed here in the industrial relevant indigenous technology, and from MSME level, startup level, and we have translational research and translational business incubator award too. And there also the evaluation will be totally based on the technology, whether your technology is innovative, whether it can be a replacement for any of the technology existing in other countries. Definitely we are going to fund it in a project funding way, or a national award is like if it is innovative and the company can take up that, there the national award will be given, and every year it is celebrated on 11th of May. And it's coming up. For submission of application in Technology Development Board, you can go through the online portal. It's mentioned here. And it is totally online mode of submission. And once you register in the online portal, there will be link for uploading all the documents. And if you are facing any problem to submit the application form, we are there to assist you then and there. If you we give guidance, starting from the day of submitting the application, we are giving necessary help for any company, even from the remote of the remote place also people are approaching us. As considered with CSIR-NML work, I just want to mention few companies who got funding in the related area. This is a company, Orange Koi Private Limited, Visakhapatnam. They are working on the metal injection molding implants, like it is the MIM process they are following for making the medical equipments, the most precise medical equipments through MIM process. And TDB has funded this company in the last year. We entered in an agreement with this company. And I could find that this area is relevant to NML research area. And the other company we funded in the year 2017, IMCO Alloys Private Limited, Mumbai.
And they successfully completed the project for their development of a sintered carbide alloys technology. And these two, both the companies are once they approached us, startup, they were in the startup level, and they were like in the just initial stage of their market, just to enter into the market. But we could see that IMCO Allies already successfully completed their project, and Orangeco is also very well they are doing. So in that way, if whoever is here on a startup, and they are ready to, means they are, if you are feeling like you are in the level of TRL 7 and looking for a large scale manufacturing facility, you may please approach technology development mode. We are there to assist you. And rather than the throughout the year application procedure, we have call for proposals. Already we have completed the call for proposals in the waste management, agriculture, green technology, drugs and pharma, and space technology. Other than this call for proposal, we have India International Call for Proposal is open now. It is first one among this is India-Israel Call for Proposals. You may please visit our website, you will get all the information there. And TDB, like the success stories from our, like 1996, the success story, first electric car, Riva, that was funded by Technology Development Board. And in the pharma sector, if you name any company, Bharat Biotech, Biologically, Ranbaxy, My Labs, all companies are funded by TDB. And we are sector agnostic. Not just the bigger, even if you look in the bigger picture, like not just Bharat Biotech and all, we have funded the startups like just even for 10 lakhs too, we have funded during the COVID pandemic. And recently we have funded many incubation centers like a CSIR-NML may be having an incubation center. Like that many IITs and IIITs, those who are having incubation center, those companies also approached us. And we have funded few companies from there, like from IIT Delhi. These are the companies we have funded from IIT system. You can say Botlab Dynamics Private Limited. Last year, during the Republic Day retreat ceremony, they have flew 1,000 drone show. That was a project funded by TDB. And these are the other companies who are funded by TDB. And next success stories and all you will hear. Anyway, this is the brief about TDB funding scheme. Rest you will hear from the Secretary TDB about all the success stories of TDB. Okay, thank you. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की महत्वता और उसके फंक्शन को बताते हुए टेक्नोप्रेन्योरशिप के विषय पर आपके दिलचस्प और जानकारीपूर्ण भाषण के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं डॉक्टर स्मिता। अब मैं अपने निदेशक महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी कि एक सप्ताह एक प्रयोगशाला की ओर से उन्हें एक मोमेंटो प्रदान करें। Thank you, sir. Before I call our next speaker, let me introduce him. Dr. Ravindra Sharma, sir. Presently, Dr. Ravindra Kumar Sharma is working as the GM of Metal Handicraft Service Center, a certification laboratory under the Ministry of Textile, Government of India, located at Moradabad, Uttar Pradesh. Dr. Sharma has a PhD degree in chemistry from the Central University, Garhwal, Uttarakhand. He has 32 years of experience in the field of metal finishing like powder coating, phosphating, lacquering, and electroplating. He has also vast experience on inspection and quality control of handicraft product and implementation of quality system as per the national and international standards.
Dr. Sharma is an auditor for NABL accreditation of chemical laboratories and has performed audit for reputed laboratories like National Test House, Defense Laboratories, Ordnance Laboratories, and National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur. Dr. Sharma has guided 2 PhD students and has published more than 20 research papers. Dr. Sharma has played a leading role in betterment of the lives of brass artisans of Moradabad brass cluster and also has contributed significantly to increase the export of brass handicraft from Moradabad. Please welcome. बैक साइड से या फ्रंट से कहीं से मतलब इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सचिव महोदय, एनएमएल के निदेशक महोदय, चेयरमैन CII एंड प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्मृता जी, ये प्रोग्राम जिनके लिए समर्पित है, इस हॉल में उपस्थित वो सभी आर्टिजन्स, शिल्पकार, एनएमएल के अदर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और जो इस हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम जैसा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ब्रास आर्टिजन, क्योंकि गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है कि हमारा जो भी शिल्पकार है वो शिल्पकार एक इस तरह के उत्पाद का उत्पादन करे जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू हो, उसका अपना रहने का, रहन सहन का स्तर बदल सके, क्योंकि जब उसका एक अच्छा उत्पाद होगा मार्केट में कोई वैल्यू होगी, जब मार्केट में वैल्यू होगी तो डेफिनेटली उसको एक काम करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, वो अपना एक आर्टिजन के साथ में दूसरे आर्टिजन को अपने इस कारोबार में जोड़ेगा। क्योंकि शिल्पकार जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनका एक हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा सहयोग है। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर कि उसकी क्या क्या सुविधाएं हैं, हम आर्टिजन के लिए क्या कर रहे हैं, जनरल मार्केट के में हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, मेरा ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उसी पर आधारित है। मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर मुरादाबाद में ये 1984 में भारत सरकार के द्वारा UNDP के एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये इस्टेब्लिश किया गया। इसमें इस समय वर्तमान में जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के रूप में मैडम सुभ्रा जी हैं, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर मुदिता मिश्रा, और इस इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव कि इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है क्या, जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है क्योंकि टोटली हैंडीक्राफ्ट के लिए समर्पित है, इस इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग अबाउट द क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ आर्ट मेटल वेयर एंड टू अनाउंस देयर एक्सपोर्ट वर्थनेस। मतलब हम एक अच्छी क्वालिटी, क्योंकि आप देखिए, आप भी जब कोई सामान खरीदने के लिए जाते होंगे तो आप भी कौन सा सामान पसंद करते हैं, जो एक रीजनेबल रेट में हो, मतलब हमारी जो पॉकेट में जो मनी है हम उस मनी के आधार पर खरीद सकें, मगर वो एक गुड क्वालिटी हो, एक उसका जो अपीयरेंस है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है अच्छी है। तो इस सेंटर का जो उद्देश्य है, सबसे पहला एक यही उद्देश्य है कि हमारा जो भी उत्पाद हो वो उसको मीट आउट करे। दूसरा है टू ऑफर द ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ स्किल ऑफ क्राफ्ट पर्सन टेक्नीशियन इंगेज इन द मेटल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब हम उन सभी का अपग्रेडेशन कर सकें। देखिए, हमारा लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ, हमें कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। हमने जिस दिन ये मान लिया कि आज हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है, आज हमें अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए जो साइकिल है वो रिवर्स होनी शुरू हो गई। तो हमारे को ये सभी ध्यान रखना है कि हमारे को अपने उत्पाद को या हमारे को अपने काम को
हमेशा एक बेटर स्टेज में लाने के लिए अपने आप को रेगुलर अपग्रेड रखना है। देखिए, नेक्स्ट है टू सेटअप ए कॉमन फैसिलिटी सेंटर विच विल हेल्प टू एक्सपोर्टर इम्प्रूव द फिनिशिंग ऑफ द हैंडीक्राफ्ट फिनिशिंग। देखिए क्या है, मतलब हम एक छोटे छोटे कहीं पर, क्योंकि देखिए मुरादाबाद के अलावा अभी मेटल हैंडीक्राफ्ट का काम, मतलब मेटल्स का काम आप लोग भी कर रहे हैं, तो हर स्टेज में अलग अलग है, तो वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक छोटा सा कॉमन फैसिलिटी सेंटर यदि वहाँ की आवश्यकता है तो उसका निर्माण कराना। नेक्स्ट, टू ऑफर द टेस्टिंग फैसिलिटी टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ द NABL एक्रेडिटेड लैबोरेटरी। देखिए क्या है, कोई भी हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है, उस हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को किसी मानक के आधार पर हम एक बेहतर बता सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपके पास में परीक्षण की सुविधा होनी चाहिए। तो एक टेस्टिंग फैसिलिटी वहाँ पर एक है जो एक्रीडेटेड है हमारा ISO IEC 17025 2017 के आधार पर। चूँकि इंडिया में एक्रीडेटेशन बॉडी हमारा NABL है, तो ये लेबोरेटरी NABL एक्रीडेटेड है। टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस R&D इन द फील्ड ऑफ द मेटल फिनिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटी फॉर मेटल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम कुछ ना कुछ R&D करते रहें। हमें बहुत रियली मैं NML जमशेदपुर का बहुत आभारी हूँ कि हम लगातार कई काम हमने NML के साथ मिलकर के किए हैं, और मैं भविष्य में भी चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी क्योंकि मेटल हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं और नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी डिवोटेड फॉर मेटल से, तो वहाँ पर भी मैं निदेशक महोदय का सहयोग चाहूँगा कि हम जो भी कर सकते हैं हम कुछ और आगे मिल करके करें। देखिए, मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर वो तो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव के साथ में वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हमारे पास में मेटल फिनिशिंग सेक्शंस हैं। मेटल फिनिशिंग सेक्शन, देखिए मेटल फिनिशिंग दो तरह की होती हैं, एक मेटल ओवर मेटल कोटिंग और एक मेटल ओवर नॉन मेटल कोटिंग। मतलब मेटल के ऊपर मेटल की परत चढ़ाना, वो परत अलग अलग हो सकती हैं, लेयर्स अलग अलग हो सकती हैं। सपोज कोई ब्रास का आर्टिकल है तो उस ब्रास के आर्टिकल पर कॉपर प्लेटिंग करना, निकल प्लेटिंग करना, ब्रास प्लेटिंग करना, टिन प्लेटिंग करना, गोल्ड प्लेटिंग करना, ये सभी प्लेटिंग्स वहाँ पर अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसके आधार पर वो जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल है वो बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। तो उसके लिए फिर पुनः वो सभी फैसिलिटीज़, एक्रीडेटेड फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटी, NSQF कंप्लाइंसेस कोर्सेस, क्योंकि आर्टिजन्स को एक मतलब पूरा उसको ट्रेनिंग देना। मैं क्षमा चाहूँगा 2 मिनट के लिए, बच्चे बैठ रहे हैं ताकि वन वीक वन लैब प्रोग्राम में इन सभी बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट पर, मेटल हैंडीक्राफ्ट पर। हम थोड़ा सा बच्चों के लिए भी बहुत शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। मैं मुरादाबाद से हूँ, डॉक्टर रविंद्र शर्मा। ये मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर, ये जो हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने के लिए मुरादाबाद में स्थापित किया गया है। इसमें काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो सुविधाएं आर्टिजन्स के आधार पर, एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चर के आधार पर हैं। जो हम अभी बात कर रहे थे कि मेटल फिनिशिंग, मेटल के ऊपर मेटल का कोटिंग चढ़ाना, वो मेटल फिनिशिंग के अंतर्गत है कि मेटल के ऊपर मेटल की कोई भी कोटिंग होती है, कोई भी कोटिंग हो सकती है, जैसे गोल्ड प्लेटिंग है, सिल्वर प्लेटिंग है, निकल प्लेटिंग है, कॉपर प्लेटिंग है, ब्रास प्लेटिंग है, कोई भी हो सकती है, बेस मेटल कोई भी हो सकता है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं। उस फैसिलिटीज़ को टेस्ट करना कि क्या वो किसी मानक के आधार पर हैं या नहीं हैं, क्या वो कस्टमर की आवश्यकता को पूरी करती है या नहीं करती हैं, वो सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं। और साथ में टेक्निकल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे जितने भी कोर्सेज हैं
हैंडीक्राफ्ट में हमारे स्वयं के डेवलप्ड कोर्सेज हैं, वो NSQF कोर्सेज, NSQF कंप्लाइंस कोर्सेज हैं। वो सभी कोर्सेज के आधार पर हम आर्टिजन्स को प्रशिक्षण दे करके, समय समय पर प्रशिक्षण दे करके हम कोशिश करते हैं कि उनके जो बनाए गए उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट में गुणवत्ता के आधार पर चेंजेज आएँ। अब देखिए बात ये आती है कि ठीक है, मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर की स्थापना मुरादाबाद में ही क्यों हुई, है ना? क्योंकि देखिए हैंडीक्राफ्ट का काम तो सब जगह है, मेटल्स का काम सब जगह है, अभी डेवलप हो रहा है, दूसरे स्टेज में डेवलप हो रहा है, बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। क्योंकि मुरादाबाद पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीतल नगरी के नाम से बहुत पहले से ही वहाँ से जो है एक्सपोर्ट होता है। तो जब वहाँ से एक्सपोर्ट होता था तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इसको क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज की वर्तमान की, तो वर्तमान में लगभग 2500 से 3000 एक्सपोर्टर्स वहाँ पर हैं जो अपने हैंडीक्राफ्ट के आर्टिकल्स जो हैं डिफरेंट कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी होंगी वहाँ पर, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी काफ़ी हैं। उसके लिए उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, उनको टेक्निकल सर्विसेज देने के लिए। उसके बाद में देखिए आर्टिजन्स, क्योंकि आर्टिजन शिल्पकार का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शिल्पकार के ना तो मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट को बना सकता है, ना एक्सपोर्टर उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो वो जो हमारे शिल्पकार हैं, हमारे आर्टिजन हैं, वो इस कड़ी के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसीलिए उनके डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। देखिए बात कर रहे थे हम मेटल फिनिशिंग सेक्शंस की, जो अभी मैंने रिपीट किया, बहुत शॉर्ट में हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो सभी फैसिलिटीज हमारे पास हैं, जैसे कॉपर प्लेटिंग है, निकिल प्लेटिंग है, टिन प्लेटिंग है, सिल्वर प्लेटिंग है, ब्रास प्लेटिंग है। आप देखते होंगे क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आजकल अवेलेबल हैं। देखिए ज्वेलरी की तो बात आप सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अवेलेबल है, मगर आपने देखा होगा कई बार दो तरह के आर्टिकल आपको मिलते हैं, है ना। सपोज हम मार्केट में पानी की बोतल, जो हम कहते हैं कि सब ठीक है, कॉपर के पानी में, कॉपर के पॉट में पानी पीना चाहिए, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी है, मगर मार्केट में चीटर्स की भी कमी नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कॉमन मैन को पता नहीं चल पाता है। सपोज उसने स्टील के ऊपर कॉपर प्लेटिंग करके आपको वो आइटम जो है बेच दिया, उसका तो प्रॉफिट बढ़ गया, मगर आपको यूनिफॉर्म प्रोडक्ट नहीं मिला। मगर क्या करें, सर्विसेज हैं हमारे पास, वो सर्विसेज अवेलेबल हैं कि भाई हम कॉपर भी करते हैं, निकिल भी करते हैं, कस्टमर के आधार पर है, कस्टमर बेस। मेरा मतलब यह है कि आर्टिजन ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि जो वो दोनों मार्केट में आराम से उनको बेच सके, कि यदि उसको किसी को प्योर मटेरियल का चाहिए तो प्योर मटेरियल, मगर वो मार्केट में उसको कंफर्म करके बेचे। बस ये है, मतलब उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक है, प्राइस कम है। प्राइस कम क्यों है? प्राइस कम यह है क्योंकि ये इसका जो बेस मटेरियल है वो स्टील है, और स्टील के ऊपर कॉपर प्लेटिंग है। ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वो जो उसने जो प्रॉफिट कमाया है ना, वो प्रॉफिट उसके डेवलपमेंट में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं और ही लगेगा। तो हमें ईमानदारी से एक ये भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए लैकरिंग एंड स्प्रे पेंटिंग, एक्रेलिक, नॉन एक्रेलिक एंड इपॉक्सी पे लैकर्स होते हैं। मतलब एक मेटल कोटिंग की हमने बात की, अब बात आती है मेटल के ऊपर नॉन मेटलिक कोटिंग की। नॉन मेटलिक कोटिंग आप ये ऐसे ही मानिए, लैकर एक ऐसे ही मानिए जैसे जब आप गर्मियों के दिनों में या जाड़ों के दिनों में, आपने देखा होगा कुछ क्रीम्स आप सभी यूज करते होंगे, मुझे जहाँ तक पूरा विश्वास है। आपने देखा होगा वो क्रीम का कोई कलर आपके चेहरे पर तो नहीं आता ना, एक ट्रांसपेरेंट होता है। आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हो सकता है पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है सनरेज की वजह से हो, है ना। हर एक का अपना अपना अलग अलग मानना है। इसी तरह से मेटल के साथ भी वही है कि मेटल क्या होते हैं, कुछ मेटल्स हमारे ओपन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होकर के बहुत जल्दी टार्निशिंग हो जाते हैं। अभी जैसे हम इस लैंप की बात करें, क्योंकि देखिए अगर ये प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं करके हमने रखा होता तो डेफिनेटली 2 महीने 3 महीने बाद ये ब्राउनिश शेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए लैकरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लैकरिंग किन प्रोडक्ट पर किया जाता है? मतलब हम जिसको ये चाहें कि वो जैसा है वैसा ही दिखाई देना चाहिए। लैकर किस प्रोडक्ट पर करेंगे? मतलब जिसकी हम अपीयरेंस को चेंज नहीं करना चाहते हैं, मगर उसकी ड्यूरेबिलिटी उसकी ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो लैकर उन्हीं सभी प्रोडक्ट पर हम वो लैकर करते हैं। उसके बाद में फॉस्फेटिंग एंड पाउडर कोटिंग, क्योंकि देखिए कुछ आर्टिकल पर तो लैकर हो जाता है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो जिनमें रस्टिंग होने की प्रॉपर्टी है, मतलब लोहा MS।
अब देखिए लोहे पर तो हम लैकर कर नहीं सकते, क्योंकि लोहा तो आपने देखा होगा घरों में जब शाम को रोटी बनने के बाद में वो तवा साफ करके रखा जाता है तो सुबह तक ही जो है कोरोसिव हो जाता है, कई कई बहुत जगह कहीं रस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो खैर हम उस तवे की तो बात नहीं कर रहे, मगर जो और दूसरे फैंस हैं या लोहे के आर्टिकल्स हैं या गाड़ी फ्रेम्स हैं, तो वो सभी आपने देखा होगा वो पाउडर कोटेड होते हैं, पेंटेड होते हैं, तो इसलिए वो फॉस्फेटिंग करने के बाद में ही पाउडर कोटिंग किया जाता है। मतलब उसको एमएस को, लोहे को प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करने के बाद में पाउडर कोटिंग किया। जैसे हम गाड़ी की व्हीकल की बात करें तो 300 से 400 माइक्रोन कोटिंग होती है। आपने देखे जो गाड़ी है, जो कार है, तो कार पर मतलब अलग अलग लेयर्स हैं, लेवलर हैं, फीलर हैं, फॉस्फेटिंग है, फॉस्फेटिंग के बाद में फिर उन्होंने एक और प्राइमर किया, प्राइमर करने के बाद में फिर पाउडर कोटिंग या पेंट्स किया, फिर उसके बाद में उसकी चमक को मेंटेन करने के लिए एक हैवी थिकनेस लैकर किया, ऐसे करके अलग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ये मेटल ओवर नॉन मेटलिक कोटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद पॉलिशिंग, मतलब पॉलिशिंग किसी भी आर्टिकल को हमारे को लैकर करने से पहले या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले उसको पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब सरफेस प्रिपरेशन। तो सरफेस प्रिपरेशन एक ये सभी डिपार्टमेंट वहाँ पर है। सैंड एंड सॉल्ट ब्लास्टिंग, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो इनग्रेव्ड आर्टिकल होते हैं, इनग्रेविंग होती है, कास्टिंग है, इनग्रेविंग है, तो इनग्रेविंग आर्टिकल को कई बार क्या होता है पॉलिशिंग प्रॉपर नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस वहाँ पर अवेलेबल है। ईचिंग एंड कटिंग, ईचिंग एंड कटिंग मतलब छोटा छोटा आपने देखा होगा मेटल के ऊपर लिखा हुआ है ना, जैसे हम लोग पेपर पर लिखते हैं ऐसे ही मेटल पर लिखा हुआ, तो वो मेटल पर लिखा हुआ पूरी प्रोसेस हमारे पास में है। ईचिंग एंड कटिंग मतलब ईचिंग भी हो जाएगा और कटिंग भी हो जाएगा, तो ईचिंग एंड कटिंग ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर। देखिए रिसर्च, अब चूंकि ये सब मेटल फिनिशिंग हो गया, पूरा हो गया, मतलब मटेरियल आया, मटेरियल आने के बाद में उसको पॉलिश किया, पॉलिश करने के बाद में कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट पूरी की गई। चाहे हो सकता है मेटलिक कोटिंग किया, मतलब मेटल ओवर मेटल कोटिंग किया गया हो सकता है मेटल ओवर नॉन मेटल कोटिंग किया गया हो, तो उसका एक क्वालिटी कंट्रोल, एक सिस्टम बहुत अच्छा है ना। क्योंकि देखा होगा जैसे जब आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तब उसके लिए चाय लेकर के आते हैं, तो जो किचन में जिन्होंने चाय बनाई वो भी एक चम्मच से लेकर के थोड़ा सा अलग लेकर के देखते हैं ना कि ऐसा ही करके कुछ होता है, देखते हैं कि भाई अच्छा मतलब हमारे को सर्व करने लायक है या नहीं है। तो वही क्वालिटी, मतलब क्वालिटी देखिए आपके घर से ही स्टार्ट हो जाता है क्वालिटी, तो ये है। तो सरफेस कोटिंग, मेटल ओवर मेटल कोटिंग सभी है, कोरोजन टेस्ट है, रेस्ट्रिक्टेड एंड हजार्डियस केमिकल, मतलब सभी टॉक्सिक मेटल्स का टेस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है। ये एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर है कि इंडिया से अलग अलग कंट्री में कितने % एक्सपोर्ट होता है, अलग अलग के हम किस कंट्री में कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्योंकि एक्सपोर्ट का स्टेटस मुरादाबाद से, अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 21-22 की बात करें तो 11,337 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट मुरादाबाद से हुआ, और जो 22-23 में 8,519 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ हैंडीक्राफ्ट से। और हम अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मैं लास्ट फिगर पर बात करूंगा 2022 से 23 जो 144,952 करोड़ रुपीस है ना। तो एक यूपी मतलब ऐसे करके, और पूरे इंडिया से अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो देखिए 32,253 करोड़ रुपीस। तो ये रेगुलर आप देख रहे होंगे हैंडीक्राफ्ट का, मतलब आप जो आर्टिकल बनाते हैं वो आर्टिकल का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत नीड है, बहुत तेजी से ये बाजार बढ़ रहा है। हमारे को ध्यान क्या रखना है कि हम जो भी आर्टिकल बनाएं वो आर्टिकल में क्या होगा, टॉक्सिक मेटल्स नहीं होना चाहिए। जो देखिए हमारे हैंडीक्राफ्ट के आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेकोरेटिव पर्पजेस के, जैसे जो हम घरों में साज सजा में लगाते हैं, डेकोरेटिव पर्पज के होना चाहिए, एक यूटिलिटी पर्पज के। तो यूटिलिटी पर्पज जो हम घरों में यूज करते हैं, मतलब अपने खाने में यूज करते हैं, प्लेट कप मग ये, तो उन सभी में टॉक्सिक मेटल्स नहीं होना चाहिए, या यदि है भी तो विद इन परमिसिबल लिमिट होना चाहिए, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, लेड, निकल, मरकरी एंड कॉपर। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं कि क्या स्टैंडर्ड लिमिट अगर वास्तव में मतलब उसको फ्री नहीं किया जा सकता तो कितना परमिसिबल लिमिट है कि लेड 0.05% तक होना चाहिए, कैडमियम इससे कम होना, कैडमियम 0.01% से कम होना चाहिए, आर्सेनिक 0.03 से कम होना चाहिए, कोबाल्ट 0.05 से कम होना चाहिए। ऐसी अलग अलग इंटरनेशनल डायरेक्टिव्स हैं जिसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम कोई भी कोटिंग्स उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करने का फैसिलिटी रखते हैं।
और नॉन मेटल्स जैसे मैंने आपने बताया मेटल ओवर नॉन मेटलिक कोटिंग के पाउडर कोटिंग 40 से 50 माइक्रोन किया जाता है। लेकर को लगभग 17 से 24 माइक्रोन लिखा है, 12 से 24 माइक्रोन तक भी हमारे जितने पैरामीटर हैं वो सभी पास हो जाते हैं। एंटिक फिनिशेस हैं, एंड पेंट थिकनेस है। देखिए एनएमएल के द्वारा एक ब्रास क्लियर के नाम से ब्रास केयर के नाम से लैकर डेवलप किया गया था। हमने उस पूरे लैकर को हमने भी टेस्ट किया था, सारी फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर मोहंती जी ने बहुत मेहनत किया, एनएमएल ने उसको पूरा बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया और वास्तव में ये इंडिया मेड मतलब बहुत ही अच्छा लैकर है, सस्ता लैकर है, अच्छा लैकर है। और हमारे आर्टिजन सभी इसको अपने जो आर्टिकल्स हैं जो मेटल ओवर नॉन मेटल कोटिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस लैकर को यूज कर सकते हैं। ये लैकर बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Sharma, for delivering a presentation of highly societal relevance. We truly appreciate it, sir. Now I am requesting Director CSIR-NML to present a memento to Dr. Ravinder Sharma as a token of our appreciation. Thank you, sir. Once again, my sincere request to all, please keep your mobile phone in silent mode, please. The guest of honor for the today program, Sri Ujjwal Chakravarti, Chairman CII Jharkhand Chapter and MD Jamshedpur Continuous Handling and Processing Company Private Limited, a JV of Tata Steel and Nippon Steel. Mr. Ujjwal Chakravarti has 32 years of experience in steel industry. Prior to joining JCA PCPL as the Managing Director, he worked in several leadership roles in Tata Steel and served Tata Tubes Business, Industrial Byproducts Division as in charge and Tata Steel BSL as its Chief Operating Officer. Mr. Chakravarti has experience in operations, supply chain, financial controlling, and project management. He is a master black belt in Six Sigma and also theory of constant application expert. He is a BTech from IIEST Seafood and done his MBA from XLRI. He has authored several papers in the area of cold rolling, iron ore agglomeration, which has been published in journals of national and international reputes. He has actively practiced best practice in industrial safety and technology. Mr. Chakravarti is the chairman of CII Jharkhand State Council in the year 2023-24. He is also actively involved in various CSIR activities undertaken by the company. Mr. Chakravarti has previously served as the board of Tata Pigments Limited, Himalayan Steel Mill Services, and International Tubes Association. With this brief introduction, I am requesting Sri Ujjwal Chakravarti sir to address the gathering. Thank you for that kind introduction. So, Mr. Rajesh Pathak, Secretary TDB, Dr. Srivastav, Dr. Ravindra Sharma, Dr. Smita Putucheri, official of CSIR-NML Jamshedpur, young entrepreneurs, colleagues from the industry. I see the artisans also come from the various places, and school children, ladies and gentlemen. So first of all, it's my proud privilege and honor to be here amongst this august gathering on this program. When I heard the idea about 1 week, one lab, and it was inaugurated, or it was like facilitated by Minister of Science and Technology.
So I found it is a very, very unique and a good project, or let's say good showcasing of the work that the various labs are doing. And I heard that all the 37 labs are doing independently, and it's an extensive program. And my congratulations to the organizing team, my congratulations to the leadership team for organizing this event. I got the invite from Dr. Srivastava, and he wrote that he would want me to discuss with respect to the legacy of the city or the legacy of the industry, the exclusive innovation, opportunity, and potential for the region. And he would also like to share and deliberate the various technology ready for leveraging from NML, seeking ideas to jointly work with the entrepreneurs, MSME, to promote the indigenous solutions. And today I see it's a wonderful opportunity where the officials from the TDB is here, where the young entrepreneurs are here, there would be a separate deliberations, and also the showcasing of the NML offering is there. But before I talk about what is my expectations and what the way I should think, let me touch upon the heritage part of this city. I don't know how many of you know that the first steel plant in the country has been built in this city. And it was the only second in Asia after the Yavata works of Nippon Steel. And post that, the various development happened, which I will talk about, just to give you some background about the history. The other major industry which represent in this city is the automotive industry. And the Aditpur Automotive Industrial, which is the cluster here, is also the oldest in India. And I am told it is one of the oldest, one of the very first in Asia. So together, the steel and automotive industry, which today cater to nearly 10% of the GDP, about 7% automotive, about 2.2% steel, which is a significant opportunity for the potential innovation and also showcasing the best practices, and also, of course, the opportunity for employment. If you see the growth of these two industries, that would be phenomenal. First, I'll talk about steel. Today, steel is 2.2% of the GDP. And as you know, that India per capita consumption is very low, is about 60 to 70 kg per capita, whereas the world average is about 200, 210. So it's a significant journey that the steel industry is poised to grow. And if you see the GDP, the way India's GDP is growing about 6 and 6.5% as against the world average of 2%, the steel is growing beyond GDP. And there is a wish, or there is a plan for the steel ministry that we would take it up to 300 million ton by 2030 and 2035, and about 500 million ton by the turn the world or the Indian independence become 100 years, 2047. And as you see, the program for the country, the major part of the steel goes for the investment in the infrastructure. Today, India is spending nearly 10 trillion rupees, which is about 10 lakhs crore, which is about 3.3% of the GDP in the infrastructure. And all the infrastructure, you name it, is requiring steel. If I talk about automotive, the automotive industry, the passenger vehicle, has clocked the highest ever of automotive productions this year, last year, financial year. But the per capita consumption of automotive or the passenger vehicle is one of the lowest in India. So automotive industry is going to grow. The point is that both the industry is having a significant position or significant portion of the GDP and would like to grow significantly.
So the industry which started from your city actually is leading the country for development of the country. That's what I wanted to tell you. Now talking about development, because the subject today is NML and research and lab, etc. You would be happy to know that even the research of Indian industry started from your city. The R&D lab of Tata Steel, which is just a few meters away, was the first industrial R&D lab, and which came in the year of 1937. And after that, the way it helped the country is phenomenal. And you may be knowing most of it, that the armored vehicle, which was named as Tata Nagar during the World War I, was developed from this lab. And then the growth of the steel industry within Jamshedpur, beyond Jamshedpur, was all led by this lab. Even in the process, let's say today, you have the coke making capacity, the use of low volatile coal in the stamp charging technology that was also developed in this lab. If I talk about this lab, NML lab, this lab was also conceptualized before independence. And just after independence, I think you know it better sometimes, 1950, this lab was inaugurated as the first metallurgical lab in the country. So in a way, this lab or this industry in steel is actually leading the country for the development of the whole society. Now I'll talk about some of the challenges. Steel, because today my subject is metal and steel, what are the various challenges that the steel industry poses? And I'll talk about first the product. Today, the high-strength steel is a requirement of every industry, because automotive industry needs the requirement of lightweighting. So we need to go for high-strength steel, advanced high-strength steel, as far as the steel is concerned, as the quality of it is concerned. Other than the high-strength steel and the product, we also need to do a lot of work on in the space of corrosion. Because all our steel which is required in construction, they need a better corrosion property. So a lot of work needs to be done in the area of corrosion. Of course, there are work happening everywhere related to alternate material. How we can, make steel stronger, richer, or can have alternate material to the steel. So there's a lot of work going on in terms of the polymer, carbon-based polymer, in terms of aluminum, strengthening the aluminum, etc. If I look about the process, let's say the steel process actually, since you know that the steel is the major emitter of carbon dioxide, it's about 5 to 7% of the global carbon dioxide is from the steel industry. The steel industry is actually going for a revolution. We need an alternate technology for the steel of the blast furnace. So that's about the process. I was mentioning in the morning that the basic raw material of the steel, let's say iron ore and coal, that is, which is coming from Indian mineral sources in the various mines across this place, actually is not of good quality, which has got high alumina, which has got high ash. So we need to do a lot of work on the beneficiation in this space. And therefore, there are a lot of work required to be done in the process innovation. Of course, the material, if I go beyond steel, you need the material, alternate material. And today the other day somebody was talking to me that they're looking for a hydrogen electrolyzer. And in the hydrogen electrolyzer, the anode and cathode, they want to be made of high quality of steel. So the steel also has a very high requirement in the alternate or green technology. In the area of EV, in the area of electrical steel, there's a lot of requirement of work related to electrical steel, and also alternate to steel, the material that what we are talking about. Now with these challenges,
if I talk about the opportunity that what NML can offer and what if I belong to CII, as how we can use the CII as a platform. On an overall basis, I think we need to create an ecosystem for entrepreneur and incubator to pilot technology of decarbonization. We need to develop a quality talent pool to cater to the emerging need of digitization, energy transition, and decarbonization in industry and collaborations. We need to do a lot of exchange program. And CII has got a platform. CII provides this platform for skilling, various skill development technology. CII has got various wings in terms of energy, sustainability, manufacturing. CII also has a young entrepreneur, the entrepreneur which are the younger below 40 who are part of the body. And it is perhaps a time has come when, with the help of the government regulators, or let's say TDB and the Ministry of Science and Technology, as being as a focal, and the academia, they also mentioned about the academia is very much ingrained in the interventions of TDB. But what we need to do is the lab, the industry, and the entire gamut of entrepreneurs, the MSMEs, they all need to create a platform and try and disseminate this technology, what is being offered by NML or the similar labs, and that we can reach out to the larger mass. So going forward, perhaps it's a time which has come that we need to create many more such platforms where we can bring in the entrepreneurs and showcase this technology, what you people are working, NML is working, so that it becomes a win-win for both the parties. And of course, we have the backup of various regulators and various supports so that we can also get a financial backup and also the support of the technology. So with this, I think it's a real honor for me that you had called me and you had helped me to reach out to all of you so that how, as a various bodies in terms of the CII, in terms of industry, that we can develop for the entire development of the metal and material space, and we can grow going forward. So these initiatives of 1 week, 1 lab, I am sure that with, of course, in subsequent sessions, I'm hearing that you are also reaching out to the entrepreneurs to explain more in detail that what are the offerings that you have. And if you require any further support from the CII to reach out to all of you and to have a detailed discussions, then we would be available. So thank you very much, and I'm very happy that you called me and shared my space. Thank you so much. अपने शहर जमशेदपुर की औद्योगिक विरासत और उनकी चुनौतियों को प्रेरणादायक प्रस्तुति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू। अब मैं हमारे निदेशक महोदय से फिर से आग्रह करना चाहूँगी कि वो राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला की तरफ से उन्हें मोमेंटो प्रदान करें। थैंक यू सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज के मुख्य अतिथि महोदय को, लेकिन उससे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। श्री राजेश कुमार पाठक, he is a 1995 batch civil service officer of IP and TAFS cadre. He holds bachelor degree in civil engineering from University of Roorkee and master's degree in water resource engineering from Indian Institute of Technology, Delhi. He also did postgraduate diploma in public policy and management from Indian Institute of Management, Bangalore.
During his 25 years long service career, Sri Pathak has held many challenging assignments in central government ministries, urban local body, special purpose vehicle, government PSU, and autonomous regulatory bodies. He has vast working experience of various government functions, which accounts and finance function, administrative function, audit function, regulatory function, policy formulation and implementation, financial management, taxation, tender and contract management, etc. Prior to joining TDB, he was holding the charge of member finance in Inland Waterways Authority of India under Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. He had also served as officer on special duty to member finance, Telecom Commission, and later to Secretary, Department of Telecommunication and Chairman. Telecom Commission, now Digital Communication Commission, as Director, Wireless Finance in DOT. He had successfully conducted mega e-auction of spectrum in October 2016. The 2016 spectrum auction was one of the most complex auction of natural resources spectrum. Under his able leadership and guidance, the entire auction was conducted smoothly and transparently in a record time. The e-auction process was later awarded the excellence second prize in the category IT initiatives to ensure transparency in e-auction in the organization by CBC in 2017. Please welcome, sir. पहले तो धन्यवाद, आपने इतना ज़्यादा हमारे बारे में कहा है इंट्रोडक्शन में, वो सब बातें अपनी जगह है. फर्स्ट ऑफ ऑल let me congratulate NML for conducting this 1 week, 1 lab program and inviting me here. Unfortunately, it so happened, I gave my consent that I will come to Avilas, and he was constantly with me, sir, aap aa jaiye, and we met him during one of my project evaluation, and thanks to Madam Smitha. So both of them were after me कि चलते हैं जमशेदपुर. और जैसा उज्जवल जी ने बताया जमशेदपुर के बारे में, चूँकि मैं भी बिहार को बिलोंग करता हूँ, कभी यूनिफाइड ये एरिया भी बिहार ही हुआ करता था, और इस अद्भुत शहर में पहली बार आने का मौका मिला है. इसके लिए भी एनएमएल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके डायरेक्टर महोदय और अभिलाष का. और जिस तरीके से इन्होंने जमशेदपुर सिटी की व्याख्यान दी है उज्जवल जी ने, मन तो ऐसा करता था कि 1-2 दिन और यहाँ पर रुक जाएं और इस सिटी को देखें करीब से, लेकिन हमारी व्यस्तता ऐसी है कि अभी मैं मंच पर बैठा हुआ हूँ और पीएमओ से मेरे पास 2 कॉल आ चुका है और मैंने उनको कहा कि मैं 12 बजे के बाद आपसे बात करूँगा. ऐसी कुछ व्यस्तता है हमारी. ऑल ऑफ सडन थिंग्स हैज हैपेंड. जैसा मैडम स्मिथा बता रही थी, हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 11th मई, एंड इस डे का एक अपना सिग्निफिकेंस है. और ये 11th मई उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, और अपने कलाम साहब जो अब इस दुनिया में दोनों व्यक्ति नहीं हैं, केवल मुरली मनोहर जोशी जी हैं. इन्होंने जो पोखरण टेस्ट हुआ था वो 11th मई को हुआ था, और उसको ही एज ए अपना एक स्ट्रेंथ की टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बहुत एक लीप फ्रॉग जंप किया. इस डे को सेलिब्रेट करने का निर्णय 1999 में लिया था इन लोगों ने, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप
इस पे को सेलिब्रेट करेंगे और अवार्ड जो अच्छा लोगों ने काम किया है टेक्नोलॉजी में उन्हें आप प्रदान करेंगे। ओवर द ईयर हम लोग करते आ रहे थे और इस बार संजोग बस ये 25वां सालगिरह है, 25th ईयर ऑफ दैट मोनूमेंटल इवेंट एंड ऑल ऑफ ए सडन इनफैक्ट वी वेयर विलिंग की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए। So last week confirmation we received, yes, Honorable Prime Minister has kindly agreed to inaugurate on 11th, but this program is now extended for around 4 days, 11 to 14. We do not have time, we are running short of time, and including 11 ministries and department of Government of India where technology as related to technology. In fact, technology, I believe, science and technology is a bedrock of all departments. Wherever you see any of the department, कोई अछूता नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर। बट नेवरदलेस उसी के आयोजन में हम लोग व्यस्त थे, तो एक विचार ये भी आया था कि शायद इस प्रोग्राम में न जा पाए, लेकिन कुछ ऐसी हमें अभिलाष ने कह रखा था और मैंने प्रॉमिस कर दी थी कि आना है, तो मैंने कहा चलिए इस प्रोग्राम में आया जाए और आप लोगों से रूबरू हूँ। और संजोग से ऐसा हुआ कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो हमारे रुड़के के एलुमनाई निकल गए, हमसे सीनियर हैं, तो मैंने कहा इसी बहाने आपसे भी जुड़ने का मौका मिला। और जहाँ तक बात है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में डॉक्टर स्मिथा ने काफ़ी कुछ कहा है। मैं कुछ एनेक्डोट्स और इसके थ्रू आपको ये आभास कराना चाहूँगा कि जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे कहा गया है कि जो करीब 40 के आसपास MSMEs सेक्टर से जुड़े लोग यहाँ पे हैं, 30 से ज़्यादा आर्टिशन है। आर्टिजन के लिए तो ऑलरेडी शर्मा जी ने काफ़ी डिटेल में आप लोगों से बात की है, और उसके अलावा बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, रफली 30 रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे हैं। तो 2-3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। अभी मैं सुन रहा था सभी लोगों का जो एड्रेस कर रहे थे, डायरेक्टर साहब ने भी एड्रेस किया, और इन्होंने कहा कि करीब 550 पेटेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं। मुझे हमेशा, मैं जब भी मंच पे जाता हूँ तो ये बात मैं कहता हूँ सभी से, और ये बात मैंने नहीं कही है, हमारे एक माननीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कहा करते हैं कि ये जो पेटेंट है ये बेसिकली जो विमेन का गहना के जैसा है। आपने सोने का गहना खरीद लिया, लॉकर में रख लिया, उसको पहन के आप बाहर जाते नहीं, उसकी वैल्यू क्या है लोगों को नहीं पता। आपने पेटेंट कर ली, आपके जो आगे एकेडमिक प्रोसेस थे हो गया, लेकिन उस पेटेंट की वैल्यू क्या हम रियलाइज़ कर पाए उस रिसर्च की? क्या कॉमन लोग तक, जनता तक उस रिसर्च का जो आपने किया है उसका एडवांटेज मिला क्या? शायद नहीं मिला। बहुत कम ऐसे रिसर्च हैं जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से ये जनता तक पहुंच पाते हैं। और इसी संदर्भ में जो आपका टॉपिक है टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप, इसका बहुत महत्व है। और जो आज 40 के करीब MSMEs यहाँ पे आए हैं, उनको एक खासकर मैं इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट की है या आपने कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट में आप जा रहे हैं तो आगे फ्यूचर क्या होगा। यदि आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज में वो बात है जो कि मार्केट्स में आप कुछ नया लेके आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आज आप स्टार्टअप है, आज आप MSME हैं, कुछ सालों के बाद आप बिग लीग कंपनीज होंगे। ये मैं अपने अनुभव ऑफ इस डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। सभी लोग याद करें कोविड के समय में जब हम लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता पड़ी थी, तो शायद पहले का समय होता
तो हम लोग फिर विदेश पे निर्भर रहते कि हमें वहाँ से वैक्सीन आएगी तो हमारे लोगों को वैक्सीनेशन होगा। लेकिन रिकॉर्ड टाइम में इंडिया ने अपनी 2 इंडिजीनियस वैक्सीन, बाद में 3 हो गई, डेवलप की। और आपको ये जान कर के बड़ी आश्चर्य होगी कि ये जो कंपनियां हैं, ये किसी ज़माने में जब इंडिया में 96-7-8 के आसपास आई थी, आपके जैसा ही ये स्टार्टअप कंपनी थी। और उनके प्रोजेक्ट को बैंक भी, वो उस समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के प्रोजेक्ट लेकर के भारत बायोटेक डॉक्टर एल्ला कृष्ण एंड शांता बायोटेक डॉक्टर रेड्डी इंडिया में यूएस से वापस आए थे कि हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाएंगे। और इनके प्रोजेक्ट को कोई बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि रिस्क बहुत थी और अपने वैज्ञानिकों पे हमें भरोसा उतना नहीं था। इनके प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने फंड किया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके अलावा जितने भी आप कंपनी का नाम लेंगे, सभी कंपनीज के प्रोजेक्ट को जो फार्मा सेक्टर में है, चाहे वो रैनवैक्स से हो या बायोलॉजिकली हो, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसके फर्स्ट प्रोजेक्ट को फंड किया है। और आज जो इकोसिस्टम डेवलप हुई थी वैक्सीन के माध्यम से, और एक ही प्रोजेक्ट में उसके बाद भी हम लोगों ने उनके 2-3 प्रोजेक्ट को फंड किया है रेस्पेक्टिवली। और ये इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं वो बेडरॉक था जिसके कारण हम लोग वैक्सीन बनाने में सक्षम हो पाए, क्योंकि वो नॉलेज, ये मेरा मानना है कि हमारे साइंस में और हमारे लोगों में ये नॉलेज की कमी नहीं है। केवल बात इतनी है कि सारे नॉलेज हम लोग यहाँ जनरेट करते हैं, उसका आईपी वगैरह ले करके कोई बेनिफिट कोई और क्योंकि हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके बेनिफिट कोई और लेके जाता है। चाहे आप चिप्स डिजाइनिंग की बात कर लीजिए, हमारे ही जो लोग हैं यहाँ पे बेंगलोर में बैठ करके वो डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उसका जो असल बेनिफिट है वो अमेरिकन कंपनीज से ले जाती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग शामिल होते हैं। उसी तरीके से जो आज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, वर्ष 2000 में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवा को हम लोगों ने फंड किया था। उस समय ये समय से पहले था। अब 20 साल के बाद उसी प्रोडक्ट का अब टाइम आ गया है। वैसे ही जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो खासकर मैं एमएसएमई को एड्रेस कर रहा हूँ, कि आप उस प्रोडक्ट में कोई आपको अहेड सोचना पड़ेगा कि आगे की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि बहुत सारे इनफैक्ट जब मैनेजमेंट के थ्योरी में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यदि आप लोगों में से किसी ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है या उसमें एक्सपोजर हुआ, तो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी होगी। जो एक जर्मन थिंकर थे थियोडोर लेविट, उन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि आपका जो मैक्सिमम एफर्ट्स है वो प्रोडक्ट के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और इंट्रोडक्शन में वहाँ पे रहना चाहिए, और मार्केट से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। होता क्या है, मैंने ये देखा है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इवेल्युएशन जो हमारे पास आती हैं प्रोजेक्ट टीडीबी के पास, उस प्रोजेक्ट में जो भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो इतने ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको क्या बोलते हैं, पैशनेट होते हैं कि नहीं साहब ये प्रोडक्ट तो मेरा बहुत अच्छा है और मार्केट में सेल करेगा ही। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर स्मिथा ने बताया कि एक्सपर्ट्स को हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और एक्सपर्ट्स फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों एक्सपर्ट होते हैं। इनफैक्ट एनएमएल से भी हमारे पास जो भी आपको मटेरियल रिलेटेड होता है, तो आपके यहाँ से भी हम एक्सपर्ट हैं। अभिलाष भी हमारे पैनल में है, आते रहते हैं। वैसे बाकी CSI और IIT से हम लेते हैं, तो वो एक्सपर्ट भी उनको सलाह देते हैं कि साहब ऐसा है, इसमें और अदर दूसरे डायरेक्शन में रिसर्च हो रखी है, आप थोड़ा सा इसको बच के देखिए। लेकिन वो बच्चे मानते नहीं हैं। हमारा मानना ये है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के कि केवल हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए ही नहीं करना है कि फॉर द सेक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, आपके प्रोजेक्ट को हमें सक्सेस भी करानी है। इसलिए हम लोगों ने जो वो मॉडल अपनाया है कि फ्री में आपसे प्रोजेक्ट हम इवेलुएट करते हैं, और ये जितने भी आप एक्सपर्ट, अदरवाइज आप उस एक्सपर्ट के पास जाए, IIT के प्रोफेसर के पास समय नहीं होता तो आपको वो टाइम दे पाए। लेकिन आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ आपके साइट पे जाके वो टाइम देते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं और आपको कोर्स करेक्शन की भी बात करते हैं। तो जितने MSMEs हैं यहाँ पे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमें प्रमोट करना है, तो NML में आने का जो मेरा एक मोटिवेशन था
वो ये था कि आप लोगों से इंटरेक्ट करूं, और जो आप 30-40 के आसपास MSME इसमें रजिस्टर्ड हैं, आप किस एरिया में काम करते हैं मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी अभी उसके बाद जैसे मैंने कहा मैं व्यस्त हो जाऊंगा, बट डॉक्टर स्मिथा रहेंगी, आपके साथ डिस्कस करेंगी। और यदि मैं यहाँ के बाद 2, 3, 4, 5 भी प्रोजेक्ट प्रपोजल आप TDB में सबमिट करते हो, तब मैं मानूंगा कि हमारा विजिट सक्सेस हुआ। प्रोजेक्ट के लिए जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनसे डिस्कस करें, थ्रू आउट डे आपके साथ होंगी, और आप उस प्रोजेक्ट को हमारे यहाँ सबमिट करें। हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव कंसिडरेशन के साथ उसको करेंगे। दूसरा, नॉट ओनली आपके जो रिसर्चर हैं, आप इस एरिया में मिनरल के एरिया में काम कर रहे हैं या किसी और एरिया में काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस एरिया आपका रिसर्च की इंटरेस्ट है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, आप ये मस्ट इंश्योर करें कि जो आपका काम है, जैसे मैंने पेटेंट की बात की थी, आप पेटेंट कराएं, आप उसको बिल्कुल अपने जो ज्ञान है, जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कराएं, लेकिन ये कोशिश करें कि इसको हम ट्रांसलेट कर पाएँ एज ए प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द यूज ऑफ कॉमन पर्सन। क्योंकि जब आप कुछ रिसर्च करते हैं तो ऑफ कोर्स कोई पहले से एक सिद्धांत है या कोई प्रोडक्ट है, उस पर आप कुछ बेहतर की बात कर रहे हैं। आपके रिसर्च के थ्रू यू आर ट्राइंग टू आइदर इनोवेट और डू समथिंग बेटर देन वॉट एवर इज इन एग्जिस्टेंस टुडे। इफ दैट बी द सो, then I don't find any reason why this cannot be translated into the real commercial usage. In fact, मैं तो अभी बीच में ये भी सोच रहा था, जब भी इनिशियल स्टेज पे है, कि हम जो ये IP है इसका ट्रू वैल्यू कैसे रियलाइज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी कंपनी का हम ट्रू वैल्यू कैसे रियलाइज करते हैं? उसके शेयर प्राइस से। भाई उसके शेयर मार्केट में है, यदि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको शेयर पब्लिक खरीदने के लिए आगे बढ़ती है। तो मेरा एक विचार ऐसा आया था, अभी मैं इस पे जस्ट प्रिलिमिनरी थिंकिंग है, कि क्यों ना हम ऐसा IP एक्सचेंज टाइप का हम लोग कुछ वर्क करें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसमें जो भी IP हमने जनरेट किया है वो सब वहाँ पे हों और वो इंडस्ट्री को विजिबल हो। लेट दैट इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर रिसर्च पे, हो सकता है फॉर एग्जांपल स्टील पे, देयर आर सो मेनी कंपनीज, वो उस पे आए और उसकी रिसर्च की उसकी वैल्यू लगाए, और जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी उससे उस पेटेंट की हम एक्चुअल कॉमर्शियल वैल्यूएशन हम निकाल पाएंगे। वो जितने दिनों तक रहेगा, और इससे एक लोगों को उस IP एक्सचेंज में वो पता भी चलेगा कि इस एरियाज में हमने ये रिसर्च किया हुआ है या आगे करने जा रहे हैं। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट पे जस्ट ए प्रिलिमिनरी थिंकिंग है। हो सकता है आगे मैं जो DG पेटेंट हैं उनसे भी बात करूंगा, पटेल से मैंने टाइम लिया हुआ है, कभी बॉम्बे जाता हूं तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। एक आइडिया था। तो आप लोग जो यहाँ पे रिसर्चर है 30 के करीब संख्या में, वो भी आप सोचिए बहुत आसान है। जो मैंने देखा है, कोई नया कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है और जो IITs में प्रोफेसर हैं वो रिसर्च करने के बाद बच्चे 2-3 मिल कर के जो टीचर होते हैं वो मेंटर बन जाते हैं और कंपनी खोल के दे डू इट। इनफैक्ट जो पहला प्रोजेक्ट हमने अपने साइंस से किया था, मैडम ने मेंशन भी किया आपको, बॉटलैब डायनेमिक्स का जो ड्रोन शो था 1000 ड्रोन, दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट साइन बाय मी एंड इट वाज इनक्यूबेटेड इन IIT दिल्ली, और सारे यंग बच्चे थे उसमें 2-3, और मेंटर्ड ऑफ कोर्स बाय द प्रोफेसर ऑफ IIT दिल्ली। ऐसे अनेकों उदाहरण, यदि मैं उदाहरण देने लगूंगा तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन बस मैं इतने डिटेल में नहीं जाता। केवल इतना कह सकता हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं MSME में या रिसर्च में, चूँकि आर्टिसन से डायरेक्टली हमारा कोई उतना एज ए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो तो रविंदर जी का फील्ड है। इवन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में मैंने 5 साल काम किया है, तो थोड़ी बहुत, और वैसे भी 2 लोग जो बैठे हुए हैं, मैं तो पहले सोच रहा था कि कहीं मैं मिसमैच तो नहीं हूँ। ऊपर उधर बैठे उन्होंने 30 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, रविंदर जी के बारे में बताएगा 20 रिसर्च पेपर, तो मैंने कहा मैं तो एक भी नहीं किया हूँ। और ऊपर से जब मैं प्रोग्राम देख रहा था तो यहाँ भी बड़ा एक फ़नी सा
दिखा कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल, आप देखिए प्रोग्राम में लिखा है PM/AM, तो मैंने कहा यार PM/AM तो टाइम से रिलेटेड है, तो ये क्या मैं सुबह में कोई मुझे वो वेलकम देगा और आफ्टरनून में करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे बाद में लगा अच्छा PM/AM हो सकता है शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग मिनिस्ट्री में यूज़ करते हैं, शायद वो शॉर्ट फॉर्म हो। को JS को जो भी नाम होता है, जैसे RK पाठक है तो JS/RKP लिख देते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री में ऐसा यूज करते हैं, उससे शायद वो हो। अदरवाइज थोड़ी कन्फ्यूजन कुछ देर के लिए मुझे थी कि भाई PM/AM है क्या चीज़ ये। बट एनीवे, thank you for inviting me and giving me time here to talk to you. But unless I get 3 or 4 project, Avilas, it is addressed to you. You have called me here and of course डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। यदि NML का टेक्नोलॉजी डेवलप टेक्नोलॉजी से 2-4 प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलते, और वो अलग बात है आगे क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, बट एटलीस्ट हमारे पास आने, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस जगह पे भी मैं जाकर, चाहे वो IITs हो या नॉर्मल प्लेसेस में, मैंने कोशिश की है कि जो कॉमन बच्चे हैं, कॉमन मैन है, उनसे मैं डायरेक्टली, क्योंकि अदरवाइज़ उनको बहुत कभी कभी लोगों को एजिटेशन होती है कि हम अप्लाई करें, मिलेगा नहीं मिलेगा, सेक्रेटरी से बात करूँ, वो टाइम देंगे नहीं देंगे। मैं 24/7 अवेलेबल होता है, एनीबडी कैन टॉक टू मी। मैं डायरेक्ट करता हूँ कंसर्न पर्सन से कि आप उनसे बात कर लीजिए। और ऐसे हमने बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट किए हैं, छोटे से लेकर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए हैं। इनफैक्ट मैं टाटा स्टील में, टाटा की नगरी में हूँ, इनका टाटा का भी एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने फंड किया, जो बैंगलोर में वो लॉन्चर बना रहे, जो हम जो भी जितने भी मिसाइल्स हैं उसको लॉन्च करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो व्हीकल के ऊपर, दैट मूवेबल रॉकेट लॉन्चर्स, सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग। सो डिफेंस में भी हम लोग काफ़ी डिटेल में, मतलब मैं सेक्टर वाइज नहीं जाऊँगा, बहुत डिटेल हो जाएगी। तो आप लोग को भी ऐसा कोई आइडिया है तो डेफिनेटली 3-4 प्रोजेक्ट तो हमें आना चाहिए मैडम स्मिथा। अदरवाइज यू हैव कम हियर, स्टेड इन द होटल और फिर वापस जाएंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। यू हैव टू वर्क विद देम एंड गेट दोज प्रोजेक्ट। With this word, I again thank the organizer, thank Abhilash, thank Director Saab to call me, and all the person on dais. In fact, I have listened to them and also learned many things. खास कर उज्जवल जी ने जो इस शहर का और जो इसकी हिस्ट्री वर्णन की थी, मतलब काबिल तारीफ़। इस शहर में आना ही अपने आप में, इनफैक्ट हमारे बैच से जो रुड़की में कुछ बच्चे निकले थे, उनकी फ़र्स्ट पोस्टिंग टाटा नगर में, टाटा स्टील में हुई थी। मुझे तो सिविल सर्विसेज देना था, इसलिए हम किसी और डायरेक्शन में चले गए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आए थे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड विद दिस आई विश दिस इंटायर डे वी हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय। Thank you so much for elaborating the topic in an interesting way, sir. And just for your information, AM and PM stands for me, Alok Meher, and PM, Dr. Pratima Mishra. So, just the short form we have used for our So, now I'm requesting Director CSIR-NML to honor our chief guest, Sri Rajesh Pathak sir, by presenting a memento. Thank you, sir. Thank you all of our invited dignitaries for expressing their views on technopreneurship in minerals, metals and materials, platform from entrepreneur and MSMEs. The delivered talks were really insightful, and I'm sure it has enlightened most of us and opened some new channels for entrepreneurship, paved routes for collaborations, fundings, and taking forward to the next level. We are grateful to all the speakers for their time, efforts to share your thoughts and experiences. अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ चुके हैं। ऐसे में मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अभिलाष को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए। Ladies and gentlemen, good morning to one and all.
No technology is worthy unless it is marketed and adopted. So thank you so much for teaching us those lessons. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event under the 1 week, 1 lab program of CSIR-NML. I express my deep gratitude to Rajesh Pathak sir for honor. And look forward to doing that. And sorry for the AM PM concept, that was Alok Meher and Pratima Meshram. I also thank Ujjwal Chakravarti sir for his insights into the recent technological demands in the theme of the event and brief the audience the mightiness of the Jamshedpur city itself. I express our deep thanks to Dr. Ravin Sharma for his wonderful talk to imbibe and promote the opportunities for brass artisans. Thank you, sir. Thank you, Dr. Smita, for presenting to us the opportunities provided by TDB in promoting niche technologies and the various channels for that. Most importantly, our deep gratitude to Director NML for his guidance and supporting us in organizing this event. Thank you, sir. Many thanks to the participants, especially Udit and Kunal and Laghu Bharti team under CII for ensuring active participation, which I am sure would be very useful to them. Also, I express my thankfulness to the Apex Committee and the overall organizing committee as OWL, Dr. Sarmishta, the day coordinator, Dr. Mohanty, the coordinating the Shilpakar Mela, our team for the event comprising Dr. Pratima, Dr. Alok, Dr. Vinod, Dr. Suman, Dr. Rajan, Rohit, Rajnikant, Sudhakar Sorenji, and the technology showcasing exhibitors for the time and tireless effort in making the program reality. Thank you, Dr. Jumki and the Hall Management Committee for the excellent arrangements. I thank the press in the anticipation for the wonderful coverage of the event. Last and never the least, we express our thanks to the audience who have been assembled over here and the answered names behind the event and seek our apologies for any shortcomings. Thank you so much. Thanks, Dr. Vilas, for proposing the board of thanks. Now, may I requesting all to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हम आप सभी को हमारे साथ चाय के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं जिसकी व्यवस्था फोयर में की गई है। 15 मिनट्स के बाद हम यहाँ फिर से एकत्रित होंगे, ग्रुप बनाएंगे और CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला की टेक्नोलॉजी शोकेसिंग और शिल्पकार मेला के लिए आगे जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।